Yeah. Okay, everyone. So continuing further on page 8 only, 66. 1 minus cos of pi plus pi y. Achha, everyone, my first question to you all, is this an allied angle? Is this an allied angle? Allied angle hota kya hai? What's an allied angle, by the way? Allied angle is when you have 90 plus minus theta, 180 plus minus theta, 270 plus minus theta, 360 plus minus theta. ऐसा ना? So is this an allied angle? Is this an allied angle? The answer is yes. Allied angle, yes, it is. Why? Because it is 180 plus theta. 180 plus theta. Pi y. Pi y is not pi. It is some angle. So it is pi plus theta. Okay, and pi plus theta means it is definitely an allied angle. Yes, absolutely correct. And the moment you see allied angle, all of y'all, your eyes must light up. Because you have simplified steps of writing down its value. So cos of pi plus theta, alright, pi 0 to pi, yeah, and plus theta means you are in the third quadrant. Third quadrant mein cos ratio is negative. Cos ratio is negative. So if cos ratio is negative, what do you write? You will write negative. And pi, you are on the x-axis. Ratio must not change. So minus cos pi y. Theta pi y है ना रे. So pi y में लिखने का. And this is only cos of pi plus pi y which you are doing. So now what will be the expression? The expression will be 1 minus cos pi y. So 1 plus cos pi y. 1 plus cos pi y. So now this is another formula. 1 plus cos 2 theta. Yeah, 1 plus cos theta. What is 1 plus cos theta, by the way? 1 plus cos theta is 2 cos squared theta by 2. 2 cos squared theta by 2. Yeah, 1 plus cos 2 theta is 2 cos squared theta. Meaning what? जो एंगल इधर दिखेगा उसका आधा होना चाहिए 2 cos squared pi y. Pi y. 2 cos squared pi y. The whole upon 2 नहीं इतना. Cos squared pi y. The angle is pi y. So 2 cos squared pi y by 2. I think that's it. Bombay. Is that? Bombay is the right answer. ठीक है? अच्छा. Then 67 tan of pi by 4 plus theta. Tan of pi by 4 plus theta. Tan of pi by A option तो 100% राइट है. वो तो फॉर्मूला है मेरा. तो A option राइट है. But keep your eyes open. There is an all of these as well. Which means everyone, A option तो राइट है ही. अगर B और C में कोई एक आपने प्रूव कर लिया कि भाई ये भी राइट, तो देन दूसरा करने की जरूरत नहीं है. ऑल ऑफ दीज मार्क कर देंगे. बट राइट नाउ ऑल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. वी आर नॉट अटेम्प्टिंग अ पेपर. सो व्हाट मस्ट आई डू? आई मस्ट ट्राई एंड फिगर आउट कि भाई अगर ऑल ऑफ दीज आंसर है तो तीनों के तीन, हाउ डू आई एक्चुअली फिगर दैट आउट? ओके, फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो गया. सेकंड वाला देखते हैं. चलो सेकंड वाला देखिए. सेकंड वाला बी ऑप्शन. चलो बी ऑप्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin 2 theta upon 1 minus sin 2 theta. So what is 1 plus sin 2 theta रे?
1 plus sin 2 theta क्या होता है? फॉर्मूला है आपका, व्हाट इज इट? इट इज cos theta plus sin theta the whole square. Cos theta plus sin theta the whole square. याद है कि नहीं रे तुम लोग को? Cos theta plus sin theta whole square is 1 plus sin 2 theta upon cos theta minus sin theta the whole square. Great. ओके, बराबर है. अब फिलहाल तो होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा. That is cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta. Cos theta minus sin theta डिवाइड बाय cos theta करेंगे, आपको A ऑप्शन नहीं आएगा, and therefore it is the right answer. So B is also correct. So effectively I already know that answer is Delhi. D. All of these. Can we figure that out, all of you? Can we do it? Let's try. C option में, everyone, C option में we are required to get cot of pi by 4 minus theta. चलो देखिए, come on, let's see. C option, cot of pi by 4 minus theta. Now इसमें हम में से बहुत जन यही करें 1 upon tan of pi by 4 minus theta. 1 upon 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. गया ऊपर, C also right, all are right, dead. पक्का? Everyone, पक्का? Okay, one more. A better game for you all to do. And I think you all should learn things now. Okay? ये तो standard है, सब लोग करेंगे. Can I write like tan of pi by 2 minus pi by 4 minus theta. Pi by 2 minus pi by 4 minus theta. Is it fair? I think it's fair because tan of 90 minus theta is cot theta. Tan of 90 minus theta is cot theta. Tan of 90 minus theta is cot theta. Aligned angle problem. And this all reduces to pi by 2 minus pi by 4. So it's pi by 4. 90 minus 45 is 45. Minus of minus plus theta. Hence the right. I hope all of you all are actually learning. It's important that you learn, everyone. Alright, are you learning? Are you clear about all the three parts that we've talked about? All the three parts are clear? Okay. Hence, all of these is the right answer. ठीक है? चलो, great. Let's proceed. Question number 68. Question number 68. ये लिख के हो गया. All of you all, have you taken the part? Okay, I am proceeding. 68 में, everyone, 68 में, can I say 1 minus tan squared theta upon 1 plus tan squared theta whole square minus 2 tan theta upon 1 plus tan squared theta whole square. ठीक है? इज इक्वल टू करके 4 ऑप्शन है. वो 4 ऑप्शंस देखने से पहले एवरीवन
क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला करके मालूम है? डू यू नो दिस एज अ फॉर्मूला? आई थिंक दिस इज फॉर्मूला फॉर cos 2 theta. Cos 2 theta in terms of tan theta is this only. अरे हाँ या ना? So this becomes cos 2 theta का square. Cos 2 theta का square. That is cos square theta. And minus, isn't this also a formula only, Ray? Is that also a formula? What formula is that? This is sin 2 theta. Sin 2 theta का square sin square 2 theta. Sin square 2 theta. Alright? And hey, is this, by the way, a formula? Is this a formula? Yes, it is. Whose formula is it? Do you see cos squared minus sin squared आया? Isn't that the formula for cos 2 theta double? Cos square theta minus sin square theta is cos 2 theta. So इसका double will be cos 4 theta. Cos 4 theta. Cos 4 theta is the right answer. Do you realize? Had it been a plus sign here, answer would have been 1. Identity होगा. Plus. Okay, then answer would have been 1. Now minus a cos double n. So cos 4 theta होता है. Cos 4 theta होता है. ठीक है, पक्का. 68 is also clear, everyone. 68 clear. Okay. Then 69. चलो वापस से हम लोग को tan pi by 4 plus theta है. Alright, tan pi by 4 plus theta and tan pi by 4 minus theta करके है. So 69, everyone, tan of pi by 4 plus theta and minus tan of pi by 4 plus theta. Tan of pi by 4, sorry, minus theta. Okay. Yes, all in all, what we do here, options अपने पास हैं 2 sin 2 theta, 2 tan 2 theta. अच्छा, sin 2 theta और tan 2 theta में डायरेक्ट फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है कुछ ऐसी, है ना? डायरेक्ट फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है एवरीवन. So let's go for what's going to be done by most of us. Okay, let's do it. Chalo, it is going to give me 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. ये आपका फॉर्मूला है, मैंने कुछ खास नहीं किया है, nothing at all. Okay, हाँ, and minus 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. 1 plus tan theta. फॉर्मूला लिखा. तो फॉर्मूला लिखने के बाद अगेन ज्यादा कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास. ओके, सो आई एम गोइंग टू से क्रॉस मल्टीप्लाई और क्या करें, नथिंग मच. ओके, सो वील गेट डिनोमिनेटर प्रोडक्ट 1 minus tan square theta. 1 minus tan square theta. Done. And when I cross, I'm going to get 1 plus tan theta the whole square minus 1 minus tan theta the whole square. Yeah, of course. All ये आपको देने वाला है. डिनोमिनेटर कुछ नहीं करना है. Don't touch it at all. 1 minus tan square theta is full and final. Okay. And numerator में I have a 1. I have a 2 tan theta and I have a tan square theta. And then I have to subtract. I'll have to subtract what? What will I have to subtract? A 1, a minus 2 tan theta and a tan square theta. So what happens now? The 1 minus 1 go.
the tan square and the tan square gone. Minus of minus plus 4 tan theta upon 4 tan theta upon 1 minus tan square theta. अरे ये इसके अंदर फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को. यस इट इज 2 into 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. क्या तुम लोग को भी फॉर्मूला ऐसा ही दिखा था? तुम लोग को भी फॉर्मूला ऐसा दिखना चाहिए था. ऑलराइट, tan 2 थीटा का फॉर्मूला अगर याद है तो ये देख के तुम लोग को तुरंत मालूम पड़ना चाहिए था. ये 4 की जगह पे 2 होना चाहिए. सो पुश द 2 आउटसाइड एंड देन द आंसर इज 2 and 2 tan 2 theta. Is this okay? Everyone, is this okay? Perfect. Not a problem at all. Absolutely fine. Absolutely fine. ठीक है? चलो, great. Everyone, before we move on, इसका एक alternate method भी बताना था. एक alternate method भी बताना था. Okay? And I want all of y'all only looking at the board. No writing, please. No writing, please. थोड़ा समझने की जरूरत है. Okay? I am writing the alternate solution, right? And I want all of you all carefully observing what I am writing. Tan 2 theta. Tan 2 theta is equal to tan of pi by 4 plus theta minus pi by 4 minus theta. फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा है, मेरे हिसाब से मैंने सही लिखा है. आप लोग भी कंफर्म कर लेना कि भाई ये tan 2 थीटा है. थोड़ी देर पहले हम लोग ने वो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किया, याद है क्या तुम लोग को? उसमें अपन ने जबरदस्ती का वो थीटा लिख दिया था ना, अंदर लिखा था कि नहीं? हाँ, बिल्कुल वैसे ही मैंने पाई बाय 4 को अंदर भेज दिया है, एकोमोडेट कर दिया है. बट पाई बाय 4 एक जगह पे है, एक जगह पे माइनस पाई बाय 4 है, कैंसिल हो गया. सो इट इज इसेंशियली 2 थीटा. ओके, नाउ लुक फर्दर. इज इक्वल टू, this is now tan a minus b. Tan a minus b. So it will become tan of a minus tan of b upon 1 plus tan a tan b upon 1 plus tan a tan b. Okay, 1 plus tan a tan b. पक्का फॉर्मूला बराबर से लिखा है कि नहीं आप देखो जरा. Are you sure? Okay, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. I am sure I written it correct. अच्छा, can I write denominator as 2? Of course, tan of pi by 4 plus theta and tan of pi by 4 minus theta are reciprocals of each other. लिखा है ना आपने? लिखा है ना? Okay, so if they are reciprocals of each other, they will cancel, nullify and get 1 and 1 2. Okay, and tan 2 theta is something upon 2. So 2 tan 2 theta is tan of pi by 4 plus theta minus tan of pi by 4 minus theta, and hence your answer. I know what most of you all are thinking in the mind. You all are thinking, अरे सर हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि ऐसे स्टार्ट करने का है? ओके, मेरे को भी पहले मालूम नहीं था, लेकिन सम सॉल्व करते करते ओके, somewhere it comes in the mind कि भाई ऐसा भी हो सकता है. और नहीं,
only practice is your answer to that question कि ये हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा, उसका जवाब नहीं है। वो आप प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, certain ideas will go in the mind, go in the mind, go in the mind, and every time you are improving. Alright, so practice करते रहना चाहिए. Alright, every time you keep improving, improve, then these kinds of solutions will come. फिलहाल आप ये solution लिख के रखो quickly. चलो जल्दी से नोट करके रख दो. And 70th one, that was the end of what I had asked you all to do, है ना? 70th sum. Okay, 70th sum, all of you all, cos alpha is easy actually. Cos lambda actually plus sin lambda, another notation for angle. Cos lambda plus sin lambda is 1 by root 2, and you all are asked to find sin 2 lambda. ये easy है. Sin 2 lambda. That means cos theta plus sin theta is given. Sin 2 theta are. What to do here? How can you relate this to this? What do I do? Square both sides. अरे रे, squaring both sides. Yes. Squaring both sides. इसको square करेगा तो क्या मिलेगा रे? 1 plus sin 2 lambda is 1 by 2. So it is sin 2 lambda minus half is the right. ठीक है. आज के लिए जो मैंने आपको बोला था वो तो हो गया है. Okay. Now what we'll do, everyone, you finish writing this down. Then next few sums na, you take a pause and you solve. Okay, and then you start off the video and see whether what you have solved I have also solved the same. ठीक है, वैसे कर सकते हैं थोड़ा, right? Up to 70 मेरे हिसाब से जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए. ठीक है, चलो आप ये नोट कर लो.